Good evening to all of you. Is this audible, visible? All clear? समस्ते join करी गले? Everyone joined? Very good evening, Shivangi. Good evening, Anju. Very good evening to all of you. Join कले समस्ते? All clear? केमती अच्छी? How are you all? केमती अच्छी समस्ते? पढ़िले सब आम लास्ट क्लास रे जहाँ पढ़ी थिले लास्ट क्लास रे जहाँ जहाँ पढ़ी थिले सब पढ़िले कौन थिला टॉपिक ऑफ डिस्कशन लास्ट क्लास रे टॉपिक ऑफ डिस्कशन थिला डेमोग्राफिक डिविडेंड हां कि नहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड थिला टॉपिक ऑफ डिस्कशन जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज कौन कौन पढ़ी मने अछि देखिबा लास्ट क्लास रो भलो अछि मो अंजू इट्स ऑल गुड शिवांगी भलो अछि ना समस्त को मकर संक्रांति रो शुभेच्छा एवं अभिनंदन कौन कले मकर संक्रांति रे अच्छा ना मकर संक्रांति कहीं गई छी एनी आइडिया मकर संक्रांति आना कहीं गई छी किछ आइडिया अछि कह जाए एटू सूर्यंकर उत्तरायण गति आरंभ हुए हाँ कि नहीं देखो ये कह दो एडाला इक्वेटर 0 डिग्री जहाँ को कहूचे देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन लगना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ दिस इज 23.5 डिग्री साउथ एडाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
Tropic of Cancer, and this is Tropic of Capricorn, and this is equator. इक्वेटर माने ओडिया रे कहउछ कोन विषुव रेखा, ठीक बुझियो मन देखा कोन कहउछ विषुव रेखा, याको कोन कहउछ कहउछ कर्कट क्रांति, कर्कट क्रांति, एटा हला कोन एटा हला मकर क्रांति नुहे या तो सन सूर्यंकर अपरेंट मूवमेंट ही थाए है न थाए सूर्यंकर अपरेंट मूवमेंट हुए कहा का 23 हाफ नॉर्थ रु साउथ भितर एति के भितर सन एटलीस्ट सन विल बी ओवरहेड वंस इन अ ईयर मिनिमम बट नॉट बियॉन्ड 23 एंड हाफ नॉर्थ और साउथ या बियॉन्ड नुहे तो एउटू ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आजि का दिन रे सूर्यंकर उत्तरायण गति आरंभ हो उत्तरायण माने नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ एउटू स्टार्ट हो वर्तमान गति कोड ना ई डायरेक्शन नॉर्थ आडू वर्तमान एटा जनवरी 14 एटी फेब्रुआरी 14 मार्च 14 एप्रिल 14 एटी पहुंचे विषुव रेखा ऊपर कोन कहली एप्रिल 14 रे कोटी पहुंचबे विषुव रेखा ऊपर पहुंचबे नो एप्रिल 14 रे कोन कहउचा कोन पणा संक्रांति महाविषुव संक्रांति कहउनांती पणा संक्रांति कहउनांती विषुव संक्रांति काहे की संक्रांति रो अर्थ कोन संक्रांति रो अर्थ कोन दुई प्रकार मास थाए पढिथियो भाव समस्त जानि थिबे दुई प्रकार रो मास थाए गोटेला लूनार मंथ आ गोटेला सोलार मंथ लूनार मंथ एंड सोलार लूनार मंथ को अनुसार ना मून अनुसार सोलार मंथ को अनुसार ना सन अनुसार तो ये मास रो एटा होची 30 दिनिया मास सन अनुसार एवं एटा होची 28 दिनिया मास जोटा तुम्हारा पूर्णिमा अमावास्या रो आरंभ हुए शेष हुए सेटा मून अनुसार कोन कहली अमावास्या पूर्णिमा जोटा आरंभ हो शेष हुए न्यू मुंडे एंड फुल मुंडे सिंपल न्यू मुंडे जो को एवं फुल मुंडे अमावास्या पूर्णिमा ना एटा कोड आरंभ हुए ना एटा आरंभ हुए संक्रांति रो कोड आरंभ हुए संक्रांति रो शेष कोड हुए ना शेष हुए मासंत रे मासंत कोन मासर अंत मासंत पढुतबे छोट बळे ओडिया रे मासर अंत मासंत मासंत रे शेष संक्रांति रो आरंभ तले कोड आरंभ हो ना सब जेतेटा 12टा राशि 12टा मास मेष संक्रांति वृष संक्रांति मिथुन संक्रांति कर्कट संक्रांति ठीक सेमती मकर संक्रांति रो अर्थ मकर रेखा ऊपर सूर्य अछंदी आज का डेट कोडू मकर रेखा रो सूर्यंकर गति आरंभ होला कोड कोरतान नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होला उत्तरायण गति जाको कहा जाय इज दिस क्लियर now these things are related to our culture and tradition जदि हम सब्जेक्ट मैटर नुहे जदि सब्जेक्ट ज्योग्राफी रे क्वेश्चन आसी पारे जदि सब्जेक्ट मैटर नुहे बट दिस इज रिलेटेड टू कल्चर एंड ट्रेडिशन जानिया दरकार ये सब हां कि नहीं बुझेला मकर संक्रांति आपको काहे की कहउचे तले एठी की तळे आसीबे त कोन को कर्कट संक्रांति तो एठी की आसीबे त सन 8 ओवरराइड करियो त कर्कट संक्रांति एठी ले मेष संक्रांति बत कहउचे विषुव महाविषुव संक्रांति जोटा हमर नुवा वर्ष आरंभ होउछि ना वर्ष आरंभ होउछि केमति देखो एठी ज्योग्राफिकल मीनिंग कोन अछि ओडिया नव वर्ष आरंभ होउछि केबे महाविषुव संक्रांति रो आरंभ होउछि ना महाविषुव संक्रांति रो ओडिया नव वर्ष आरंभ होएनी तने एउठू तने एटा विषुव रेखा ऊपर सूर्य थिला बेले आरंभ होछि ना दिस इज द परफेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर अ ईयर टू स्टार्ट बट जनवरी 1 जो हम करछे इंग्रजी नूतन वर्ष नो देयर इज नो सिग्निफिकेंस देयर इज नो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1 जनवरी इंग्रजी नूतन वर्ष जहा को हम पालन करछे तार किछि ज्योग्राफिकल बा कल्चरल सिग्निफिकेंस ही नाही रादर ओडिया नव वर्ष केवल ओडिया नुहे बहुत जगह नुआ वर्ष पालन करन फर्स्ट 14th ऑफ अप्रैल कहीं कि ना बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ or the apparent because of the apparent shifting of sun apparent movement of the sun is this clear एबे जानि हैला मकर संक्रांति कोन कर्कट संक्रांति कोन विषुव रेखा कोन जानि हैला कि नहीं बस आउ खाली मोर गोटे छोटिया क्वेश्चन आंसर दे दियो नो ए रेखा गुडा का भितर व्हिच लाइन क्रॉसेस इंडिया इंडिया देखि को लाइन क्रॉस करूछि which of the following lines passes through India tropic of cancer tropic of capricorn equator or arctic circle which line passes through India को लाइन टा इंडिया दे के पास करूछि के कहि परिबे
को बिलटा इंडिया दे पास करछि को रेखाटा इंडिया दे पास करछि व्हिच लाइन पासेस थ्रू इंडिया जल्दी कहूँ क्विक रेस्पॉन्स प्लीज केही कहि परिबेनी मते कहूँ इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर अच्छी ना साउथ हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर अच्छी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर व्हाट इज इंडिया's geographical position इंडिया रो जियोग्राफिकल पोजीशन कौन नॉर्थ और साउथ इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन को नॉर्थ रे अच्छी इंडिया तो जेहेतु इंडिया नॉर्थ रे अच्छी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया इट अछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो एमती पास कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया गोटे होमवर्क दोची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया रा को स्टेट दे की पास करछि मते कहबे नेक्स्ट क्लास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉर्थ passes through India ना को स्टेट दे की पास करछि को स्टेट दे की पास करछि मते कहबे नेक्स्ट क्लास दिस इज द होमवर्क को स्टेट दे की पास करछि कहबे ना ये क्वेश्चन आसे हैला 근데 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कंट्री दे पास करछि मध्ये क्वेश्चन आसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऊपर भी क्वेश्चन आस पारे बट ये ज्योग्राफी रो क्वेश्चन आसे खाली डिस्कशन होउतला बोली कहि दिली तुमको मैं आज मकर संक्रांति पाई कहि दिली एटा चलो केतरा क्वेश्चन को आसीबा तापरे मु आसीबी आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट क्लास हम डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़िथिले मते को फर्स्ट सेंसस केबे हितला इंडिया रे क्विक रेस्पॉन्स देबे जल्दी जल्दी कहबे नुवा पाठ को जिबा इंडिया रो फर्स्ट सेंसस केबे हितला क्विक इंडिया रो रेगुलर सेंसस केबे टु हितला इंडिया रो फर्स्ट सेंसस केबे इंडिया रो फर्स्ट सेंसस केबे हितला इंडिया रेगुलर सेंसस केबे हितला इंडिया लेटेस्ट बा लास्ट सेंसस केबे हितला इंडिया लास्ट सेंसस केबे हितला फर्स्ट सेंसस फर्स्ट रेगुलर सेंसस केबे टू लास्ट सेंसस केबे हितला नमस्कार वर्षा लास्ट सेंसस हितला 2011 रे नुई 2011 এটা थिला फर्स्ट सेंसस केबे ना 1872 फर्स्ट रेगुलर हितला केबे ना 1881 এটা মনে রাখিও মনে রাখুন কিছু আচ্ছা মতে কহ মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড স্টেট কি मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट की इंडिया रे बिहार देखले ना काली पूर्व थिला वेस्ट बंगाल अच्छा यूनियन टेरिटरी की यूनियन टेरिटरी कौन देखले यूनियन टेरिटरी की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी किए दिल्ली मन नहीं
अच्छा लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी किए लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी किए कौन कहली लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी किए मन रखुन कि पढ़ुन लास्ट क्लास अंडमान निकोबार अंडमान एंड लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट किए लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट किए अरुणाचल प्रदेश मन रख केते कहबी एटा कहितली बा लास्ट क्लास रे अरुणाचल प्रदेश हैला ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्लास नेक्स्ट आज क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कौन आंसर माइक्रो मैक्रो income employment theory development economics what is the answer study of individual units is called what is the answer what is the answer कहते फर्स्ट क्लास रे पढ़ी इंडिविजुअल यूनिट रो स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़ा जाए कोडी यस वेरी गुड रूपश्री दिस इज डिस्कस्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम abundance convenience scarcity none of this abundance convenience scarcity none of these what is the main cause of economic problem शुभलक्ष्मी स्कार्सिटी अन्य माने समस्त कहतु scarcity everyone agreed so main cause of economic problem is scarcity because human want जब देखिए human want is limited or unlimited human want this is limited unlimited sorry this is unlimited human wants are satisfied by resources are limited so satisfying unlimited human want by using limited resource satisfying unlimited human want by using limited resource हैला next study of aggregate is known as economics ro question ପାଇଁ कहउथला ना last class question ପାଇଁ कहउथला ना
आज किसी क्वेश्चन करो स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज कौन macro or micro in aggregate we discuss about macro study of aggregate रे we discuss about macro total ऊपर पढुचे इठी हमें total ऊपर पढुचे so this is macro when did great depression occur great depression केबे हितला when did great depression occur when did great depression occur नाइनटीन 2930 very good 1929-30 करेक्ट समस्ते समस्ते कहतु सिमरन भाग्यश्री वर्षा 1929-30 next who is the father of modern macroeconomics who is father of modern macroeconomics who is modern of J.M. Keynes, Adam Smith be father, but modern macroeconomics we talk generally we talk about J.M. Keynes. Keynes, yes, correct. Keynes. Next, Mr. Skand Kumar wants to study national income. Which branch of economics will he have to study? जने national income ऊपर पढ़ियो के चाहूँगी तो से को branch of economics पढ़ियो जने national income ऊपर पढ़ियो के चाहूँगी से को branch of economics पढ़ियो which branch of economics he have to study macro correct this is macroeconomics है general price level is studied in general price level is studied in कोडी पढ़ा जाए price level is studied in microeconomics macro both none general price level is studied in micro or macro or both or none no price level is a factor of macroeconomics not both you are talking about the whole of the economy you are talking about the whole of the economy so the correct answer is macro that is why the correct answer is macro next
Employment theory is related to static, micro or macro. Employment theory is related to static, micro or macro. This is related to macro. Related to what? Related to macro. Next, macroeconomic studies. Macroeconomics studies. Employment opportunities in the economy, the theory of supply of commodities, elasticity of demand in sector, price of wheat in the market. Macro रे कौन पढ़ुचे? Macro economy is all about the aggregate, about the whole economy. So whole economy रे हमें कौन पढ़ुचे? And here we talk about employment opportunity in the economy. Your whole economy रे employment opportunities कौन अच्छी? In the branch of economic theory that deals with problem of allocation of resource. One of the branch of economics which deals with allocation of resource. Resource allocation is studied in macro or micro economy. Jaldi, resource allocation is studied in resource allocation is mostly in micro. Resource allocation is mostly in microeconomics. Study of how increase in the corporate income tax will affect the natural unemployment rate is example of micro or macro. Corporate income tax rate ऊपर impact पड़ेगा, it will have impact on natural unemployment rate. This is example of क्या example ये? Example of macro. Okay. हो ऊपर देखिए. आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आसीबा. टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. Sustainable development. Now when I say growth in the economy, growth of economy means increase in GDP. Okay, right? Growth of economy means increase in GDP. More GDP means more production. More GDP means more production. No, growth of economy means more GDP. More GDP means more production. More production means more industrialization. More production means more industrialization. More industrialization means more negative impact on environment. Yes or no? More negative impact on the environment होंगे नहीं? हाँ? More negative. Now this is called unsustainable development. More negative impact on economy is called unsustainable development. चलो unsustainable development भीतर कौन आसुची देखा? Unsustainable development भीतर कौन आसुची? First this is not environment friendly. This is not long term.
this means this is short term. Resource exploitation unnecessary, resource exploitation. Future generation rights hampered, rights of future generation hampered. हाँ कि नहीं, ये सब गुड़ाक मिसला पर जहाँ मिले ताको कहते अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. बुझिला व्हाट इज अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्लियर व्हाट इज अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाँ कि नहीं, this is called unsustainable development. So development that meets needs of future, needs of present without compromising ability of the future generation. Present generation need को satisfy करूची, future generation need को hamper न करी. कौन कहली? present generation need को satisfy, present generation need को satisfy करूची without hampering needs of future generation, that is called sustainable development. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो सोर्स कोन, हिस्ट्री कोन, कोड आसिला ना गोटे आर्टिकल आसीतला जाना होची आवर कॉमन फ्यूचर, व्हिच दिस इज नोन एज द ब्रुटलैंड रिपोर्ट. आको ब्रुटलैंड रिपोर्ट बोली मध्ये कहया जाय. एथिरे डिस्कशन होला इट इज अ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज इन द कांसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट. कोन इट इज अ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज इन द कांसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट. बुझिए ना? तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट कौन गला? ब्रुटलैंड रिपोर्ट ना, ब्रुटलैंड रिपोर्ट फोकस्ड ऑन Brundtland report focused on the common future. एवटू आसिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कथा. ताले यूएन जनरल असेंबली कहिले दीटा कथा कहिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन? वेलबीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट. कोन कहले यूएन जनरल असेंबली? यूएन जनरल असेंबली दीटा कथा कहिले. फर्स्ट कहिले वेलबीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट रो वेलबीइंग बाय एनवायरनमेंट रो प्रोटेक्शन. Second, sustainable development involves cooperation on global scale. मते कहंदु sustainable development is country specific or this is uniformly applicable to all the countries. समस्त every country has to take care of, every country has to take care of the environment, or only every country has to take care of the environment, or only some countries has to take care of the environment. कौन हो? कौन हो? No, climate change, global warming, or unsustainable development. This is for, this is a concern for all the countries, not only for India or some countries. This is a concern for all the countries. So sustainable development, this is all about integration. This is all about integration, developing in a way that benefits the widest possible range of sectors across borders, even between the generations. Even between the generations. So in other words, our decision should take into consideration potential impact on society, environment and economy. कौन कहूँ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करियो, बट यार इम्पैक्ट कौन? व्हाट इज इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? व्हाट इज इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? ये सब गुडा को ऊपर इम्पैक्ट पकाउछि. बुझिएला? नेक्स्ट, now sustainable development ये कहूँ economic growth should be spreaded to everyone, talks about equality. कौन कहूँ equality? समस्त equality is a, it is a part of justice. Equality is a part of justice, yes or no?
It is a branch of justice. So it is spreading benefit of economic growth to all citizens, turning brownfields into ecologically sound urban housing projects, increasing educational opportunities both for girls and boys, innovative industrial process, including citizens and stakeholders in policy making process. समस्त include करिया पई कहूची कौन कहूची to include everyone. So मते कहंतु sustainable development is interconnected or not? कहना समस्तंकर सहायता दरकार, समस्तंकर सहयोग दरकार, सहयोग सहायता सब कंट्री मानकर दरकार हैला, सहायता सहयोग सब कंट्री मानकर दरकार. चलो कौन हम को integrated or interconnected or not? Interconnected, yes, agreed. Yes, interconnected. Okay. Next, key pillars of sustainable development: economic sustainability and environmental sustainability. Economic sustainability and environmental. Economic sustainability अर्थ कौन? Economic sustainability अर्थ होची long term economic growth. Long term economic growth. No impact on social or environmental condition. है supporting green job, supporting green job. This is economic. Now environmental sustainability means preserving biodiversity, managing renewable non-renewable resources like water, energy, minerals, transition from fossil fuels to renewable energy sources, reforestation, biodiversity protection, biodiversity conservation. हाँ कि नहीं, ये सब गुड़ा को मिसी गला में तो कुछ कोना environmental. All these are environmental sustainability. Clear? कौन कहले all these are environmental sustainability. बुझेला? Then the next is social sustainability. Social sustainability रा अर्थ कौन? Promoting gender equality, education, health care, access to basic services, fair distribution of resources. ये सब वाले कौन? All these are called social sustainability. All these are social sustainability. Improving access to quality education, health care. यहाँ पे किसी स्कीम अच्छी कि इंडिया रे क्वालिटी एजुकेशन एवं हेल्थ केयर पाई इंडिया रे किसी स्कीम अच्छी? Name of any scheme? Okay.
नाउ एबे हम केतरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आसीबे हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये क्वेश्चन आसीबो ये क्वेश्चन आसीबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केते ना 17 सस्टेनेबल गोल्स एंड 169 टारगेट्स 17 goals and 169 targets है ना कहले कोना दिस इज कॉल्ड एसडीजी सो 17 टा एसडीजी 17 एसडीजीज आर देयर देखिले एसडीजी 1 इज नो पॉवर्टी व्हाट इज एसडीजी 1 SDG 1 is no poverty. So equal to end poverty in all its forms. So nothing is more painful than poverty. Nothing is more painful than poverty. है ना? So zero hunger. SDG 2 is zero hunger. Which achieving food security. Food security means 3: accessibility, availability, and affordability. Accessibility, affordability, and availability. Accessibility, affordability, and availability. That is food security. SDG 3 is good health and well-being. Ensure healthy lives and promote well-being for all. It ensures healthy life and promotes well-being for all. Then 4 is quality education. Now यार related किसी scheme कही परिये मते के no poverty ପାଇଁ PDS very good. आउ zero hunger ପାଇଁ किसी scheme PDS zero hunger ପାଇଁ अंत्योदय scheme अछि. For zero hunger you have अंत्योदय scheme also. नहीं. SDG 4 is quality education. SDG 4 what is SDG 4? SDG 4 is quality education. SDG 5 quality education ପାଇଁ कोन scheme अछि? What are the schemes for quality education? ये कहि परिबे? Schemes for quality education कोन अछि? ओडिशा आदर्श विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान सभी में पढ़ंतु जोटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बहुत स्कीम अछि समग्र शिक्षा नहीं then 5 gender equality to achieve gender equality and empower all women and girls to achieve gender equality and to empower all women and girls एठी कोन हो स्कीम कोन अछि एठी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी परियो जेंडर इक्वालिटी पई पोस्ट प्रोहिबिशन ऑफ sexual harassment at workplace prohibition of sexual harassment at workplace haba next clean water and sanitation next is clean water and sanitation it ensure availability and sustainable management of water and sanitation it ensure availability and sustainable management of water and sanitation okay nahi clean water by scheme kon achi pori program very good thank you pori program now clean water by kon scheme very good arnav ami scheme la vasudha scheme vasudha scheme 7 number affordable and clean energy affordable and clean energy ପାଇଁ କିଛି scheme ଅଛି talks about renewable energy affordable and clean energy it is all about renewable energy what scheme what is the scheme for affordable and clean energy ujjwala
उज्ज्वला स्कीम सौम्य सौम्य ना बदल जाइए कही आउ थे भूली जाइए ठीक है सौम्य yes Ujjwala scheme very good decent work and economic growth to promote sustained inclusive and sustainable economic growth we are going to promote sustained inclusive and sustainable economic growth full and productive employment decent work and decent work next industry innovation and infrastructure industry innovation and infrastructure you are going to build resilient infrastructure promote inclusive growth sustainable industrialization means less impact less negative impact on the environment less negative impact on the environment reduce inequality within and among countries within countries means country bhitare among countries means mu kai mane kar USA versus India versus Nepal now this is among countries now within country mane India bhitare north versus south versus northeast or mu kahibi Karnataka Tamil Nadu Kerala versus Bimaru states next 11 number sustainable city and communities यहाँ पे कौन स्कीम अच्छी long term में जो city now most of the cities in India they are facing some sort of environmental issues for example Delhi is facing chronic air pollution now your Hyderabad Bhubaneswar Bangalore Chennai they are facing water shortage water scarcity Mumbai is facing urban flood so almost all the cities in India they are facing some sort of environmental issues so ये कौन कहूँ ना ये कहूँ to protect or to have sustainable city PM E drive हाँ आसीपर सौम्य सस्टेनेबल सिटीज रे कौन आसीबो स्कीम तो ये कुछ लॉन्ग टर्म रे जेमती सिटीज गुडा चली कौन आनिबो स्कीम्स लाइक अमृत हृदय ये सब आनि परिबो स्कीम हो कौन then responsible consumption and production responsible production and consumption responsible production and consumption माने कौन हमें यूज करछे घरे बसिले उठिकी गले घर सेमती फैन टीवी एसी चलची when while no one is there no one is using it responsible means if required use if don't required don't consume don't use then is climate action take urgent action to combat climate change and its impact climate action means climate change pai take some urgent action for climate change. So the next is life below water and life on land. Life below water and life on land कौन the conserve and sustainably use ocean seas marine resource को sustainably use करियो life on land same the protect restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem this is all about protecting the ecosystem both terrestrial and protecting both terrestrial ecosystem and the ecosystem the ecosystem life below the water and life on the earth on land peace justice and strong institutions to promote peaceful and inclusive society
to promote peaceful and inclusive society, peace justice. Now bina peace bina justice re economic growth hei paribo. Now you take the example of disturbed regions of world like Gaza Strip, Israel Palestine conflict, Russia Ukraine war, Afghanistan example niyo, Genji movement Nepal, Bangladesh ର କଥା ନିଅ. So no peace, no justice means no strong institution means no development. ହେଲା. Then partnership for goals. ये जेते गुडे गोल पढिले याको कोन सेमति अचीव करियबो नो. ये सब पे कोन दरकार ना, ये सब पे हमको पार्टनरशिप रा आवश्यकता अछि. Next point passive. What are the challenges in 17 टा गोल बुझिए गेला. 17 goals are classified into 169 targets. ये 17 टा को कहते हैं SDG, Sustainable Development Goals. हैला. Clear. Next आसे what are the challenges in achieving sustainable development. Sustainable development achieve करिवारे challenges कौन. What are the challenges in achieving sustainable development? Go. First, climate change होउची कि नहीं. Climate change is the cause of concern, yes or no? Yes. Yes, climate change is a cause of concern. Then poverty and inequality. Inequality, poverty पाई there is no access. समस्त को पाखरे access नहीं. समस्त को पाखरे access नहीं. Thank you. Then unsustainable consumption हवा. Unsustainable जोड़ा developed world एमानकर per capita resource consumption is very high. Per capita resource consumption से अधिक resource consume करते as compared to other countries. As compared to other countries. Next, high population growth. Because of high population growth, resource availability reduce per capita resource availability reduce. Resource depletion, unsustainable extraction of resources like fossil fuels, minerals, metals ako unsustainable way रे use करा जाउछ. एटा गला resource depletion. बुझिएला. बुझिएला एबे ना डाउट अछि. तले मते केतरा क्वेश्चन कहि दियो. Sustainable development कोड आसिला. ये concept कोड or it is this concept is originated from which report? Concept of sustainable development originated from which report? Concept of sustainable development is originated from which report? What is name of the report? What is name of the report? Sustainable development. Asila कोड ये concept. How many sustainable development goals? Brundtland report, very good. Brundtland report. केतरा sustainable development goals अच्छे? केतरा goal अच्छे sustainable development goals केतरा? How many sustainable development goals are there? 17. How many sub targets? How many targets? 100. 17 goals divided into how many targets? Divided into how many targets? Divided into how many targets? 116 targets. Then what are the challenges for sustainable growth? कौन problem face करते sustainable growth रे? Challenges कौन face करते sustainable development growth रे?
कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हो पार हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी गुड जेंडर इनइक्वालिटी पॉवर्टी इनइक्वालिटी वेरी गुड बहुत बढ़िया ताले बुझी गला मते कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड जहां भी आसीबो क्वेश्चन करि परिबे या व्यतीत आमे आउ किछि क्वेश्चन डिस्कस कले स्पेशली ऑन नेचर ऑफ द इकोनॉमी जेतले आमे एग्रीगेट इकोनॉमी ऊपर डिस्कशन करछे सेटा कोन कहा जाय माइक्रो और मैक्रो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीगेट होल ऑफ द इकोनॉमी दैट इज माइक्रो और मैक्रो कोन कहूजे दैट इज कॉल्ड माइक्रो और मैक्रो now who is the father of modern economics who is father of modern economics Keynes yes okay ठीक है आई होप ताल समस्त बुझिले आज क्लास रू क्लियर आज क्लास बुझीला और एनी डाउट क्लियर ना किसी डाउट क्लियर ऑलराइट देन दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आउ जा नेक्स्ट क्लास देखिबा पढ़ी के आसंतो पुणी आसना काली आउ किछि इंपोर्टेंट नुवा टॉपिक आनी के आसीबी ऑन इकोनॉमिक्स थैंक यू गुड नाइट थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल गुड नाइट